Art of Living and Shrishi School of Yoga. I'm Isha. I'm Mayur. You've been doing yoga for more than a week now, so quickly write down in the comment section what your experience has been. हमें जल्दी से बताइए comment section में कि आपका अनुभव अभी तक योग करने का क्या रहा है. And today we are going to do a session on chair yoga. You know, you all want to do yoga on a regular basis, but how can you do yoga when there's less space? Sit on a chair and you can still practice yoga. आप कैसे कम जगह में भी, अगर कम जगह है उस पर कैसे कुर्सी पे बैठ के योग का अभ्यास कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे. You know, in Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna says, Yoga karmasu kaushalam. Yoga is skill in action. You know, to cook, to drive, or to even paint, to do anything in your life, you need some skill. But the kind of skill that we are talking about here is a skill to live life. You know, in our life, we meet different kinds of people, face different kinds of situations, favorable or unfavorable. How to manage your mind through all these situations while working with all sorts of people, that is what comes when you practice yoga. देखिए, हमें खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, पेंट करने के लिए एक कुशलता चाहिए, है ना. पर जो हम कुशलता की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जीवन जीने की कुशलता है. ये कैसे हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करके अलग अलग तरह की परिस्थितियों में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन को हम मैनेज कर सकते हैं. वो कुशलता आप में आती है जब आप योग का अभ्यास करते हैं. ठीक है. सो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. शैल वी बिगिन? Yes, let's begin. ऑलराइट. सो लेट्स गेट ऑन द चेयर. So if you have a chair without arms, that will be very good. But even if you have arms on the chair, it's fine. So let's sit with our eyes closed. We'll start by chanting Om 3 times. Keep a gentle smile on your face. Now breathe in for Om. Wherever your mind is wandering, bring it back to this moment. आपका मन जहाँ भी जा रहा है इस क्षण में लेके आ जाएंगे. And slowly you may open your eyes. And today we are going to do Kaki Pranayam. So for Kaki Pranayam, you inhale, bend back slightly, look up, exhale through the mouth, through spurts of breath and bend forward. काकी प्राणायाम के लिए सांस अंदर लेते हुए पीछे झुकेंगे और मुंह से सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे. धीरे धीरे सांस छोड़ना है. You can close your eyes. आंखें बंद कर सकते हैं. Breathe in. Exhale out. In. In. 2 more times. 2 बार और. Breathe in. In.
And slowly come up and observe the sensations within. शरीर में जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति सजग हो जाएंगे. And feel the rush of energy in your body. ऊर्जा के संचार को महसूस करें. And you may slowly open your eyes. And today let's start with a standing warm-up. Since we are going to sit throughout the session, let's stand up and do some warm-up. खड़े होके कुछ warm-up करते हैं क्योंकि आज सारा session हम बैठ के करने वाले हैं. So if you want, you can still take support of the chair. Place palms on the waist who are not taking support of the chair and start swinging the leg, front and back. And relax. Now left leg. चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं चेयर का, कुर्सी को पकड़ सकते हैं. And relax. And now let's do some on-spot jogging. Move your shoulders front and back. कंधों को आगे पीछे करें थोड़ा सा. Shake your hands. Move them up and down. You can also move your head along with it if you want. चाहे तो सर को भी हिला सकते हैं. And relax. Now let's sit down. And we'll do some neck movements now. So when you're sitting, it is good to keep the feet a little away so that your grip is strong on the chair. आप पैर को थोड़ा दूर रख के बैठ सकते हैं ताकि आराम से बैठ पाए. Now inhale, look up. Exhale, chin to the chest. सांस लेते हुए ऊपर देखें और सांस छोड़ते हुए थोड़ी छाती पर. Up, down, up, down, up, down. And come back to the center. Take a breath in and breathe out. Look to the right. दाईं तरफ देखें सांस छोड़ते हुए. Breathe into the center. Breathe out to the left. Right, left, right, left. And come back to the center as you inhale, सांस लेते हुए बीच में. And as you exhale, without lifting the shoulders up, take your right ear to the right shoulder. दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ लेके जाएंगे, पर दाएं कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कान को नीचे लेके जाएंगे. Breathe into the center. Breathe out to the left. Right, left, right, left, and come back to the center.
Now let's make some small circles with the shoulders. From front to back. आगे से पीछे कंधों के साथ धीरे धीरे छोटे छोटे गोलाकार बनाएंगे. Now opposite direction. दूसरी दिशा में पीछे से आगे. And relax. दोनों हाथों को साइड में लेके जाएं. Stretch your arms at shoulder level and start moving from the shoulders to the right and left. दाएं से बाएं कंधों से हिलेंगे. Are you all smiling? That is the most important skill to have, isn't it? A pleasant mind, a smile on the face in favorable or unfavorable situations. अगर चेहरे पे मुस्कुराहट है तो यही कुशलता है, अच्छे या बुरी परिस्थितियों में भी. And come back to the center. Relax the arms and move front and back. You can move to the center of the chair and move front and back. Move forward as much as you can. जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना काफ़ी है. And if you want, you can hold the chair for support. कुर्सी को पकड़ सकते हैं साइड से, चाहे तो सपोर्ट के लिए. And come back to the center. Now, with the shoulders, inhale, take your shoulders up and pump your shoulders up and down. कंधों को ऊपर नीचे करेंगे and you can continue inhaling and exhaling. सांस अंदर बाहर ले सकते हैं, रोकने की ज़रूरत नहीं है. No need to hold the breath. And exhale through the mouth and let go. Make a ha sound. Breathe in, shoulders up, 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 up. As much as you can, take them close to the ears and pump. One more time. Breathe in and pump. You can also take your arms up this time, like you're doing some kind of a dance. Ballet, ballet. And look to the right. Center and to the left. See, when you're dancing, there's no option but to smile, no? नाचते हुए तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं. And relax. Now hold the chair from the sides. You can keep the feet away. साइड से चेयर को पकड़ लें ताकि आपका बैलेंस अच्छा रहेगा जब आप साइड में मूव कर रहे हैं तो. Take a breath in and breathe out. Go to the sides. Move like a pendulum. Go to the side as much as your body allows you to do. You don't have to bend too much also. बहुत ज़्यादा साइड में बेंड नहीं करना है. The chair should not topple off. Chair साइड में हिलना नहीं चाहिए. जितना बैलेंस बना के कर पा रहे हैं उतना जाएंगे. And come back to the center. Now bend your right leg. Place the right foot on the left thigh. दाएं पैर को बाएं जंघा पे रखें. Now inhale, lift the right leg up. Exhale, push it down. You can exhale through the nostrils with a little bit of force when you're doing this. नाक से थोड़ा जोर से सांस छोड़ते हुए आप पैर को नीचे पुश कर सकते हैं. And relax. Now the left leg.
and relax the left leg. Now bend the right leg, take it back as you inhale, exhale, stretch it to the front. दाएं पैर को मोड़े सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पुश करें. 1 2 3. आप चाहें तो पैर को ज़मीन पे भी रख सकते हैं. If you want, you can place the foot on the floor and stretch it to the front. And relax. Now the left leg. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now both the legs together. Let's add some fun to it. For this you might have to hold the chair. इसके लिए चेयर हो सकता है पकड़नी पड़े दोनों पैर के साथ. 1 2 3. Continue. See, when we did this standing, the movement was from the hip. Right now you see the movement is from the knee. घुटने से हम पैरों को हिला रहे हैं. खड़े थे तब हिप से हिला रहे थे. And relax. विश्राम करें. Now move to the front slightly. थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. Now inhale, lift your toes up. Exhale, inhale, lift your heels up. Exhale, lift your toes up. सांस लेते हुए एड़ी को उठाएंगे, छोड़ते हुए उंगलियों को, पैरों की. And relax. Now stretch your right leg to the front and let's do some ankle rotations. एड़ी से दाएं तरफ से घुमाएंगे. Opposite, बाएं तरफ से. And up and down, ऊपर नीचे. Right and left. And relax. Now left leg, clockwise, दाएं तरफ से. बाईं तरफ से ऑपोजिट. And up and down. You know, in today's session we are going to stretch our entire body just with the chair. सिर्फ एक कुर्सी के साथ हम हमारे पूरे शरीर को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. Right and left, दाएं बाएं. And relax. Now gently start tapping your feet on the mat or on the floor. पैरों को धीरे धीरे ज़मीन पे लगाना शुरू करें. कंधों को हिलाएं. And relax. Now let's start with the asana. But before that, I would just like to tell you that tomorrow we have a lovely session on full body detox. You know, we will do some asana, some movements for lymphatic drainage. You know, in our body, some toxins get accumulated over a period of time. And tomorrow we are going to work on eliminating these toxins from the body. कल हमारा एक सेशन है फुल बॉडी डिटॉक्स पे जिसमें हम लिम्फैटिक ड्रेनेज करेंगे. देखिए हमारे शरीर में एक टाइम पे करते करते
कुछ पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। तो कल का जो हम सेशन करेंगे उसी पे करेंगे कि कैसे अपने शरीर से इस तरह के पदार्थों को निकालें, कैसे इन टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से निकालें। सो कल के सेशन में आप ज़रूर आइए। एंड ऑल्सो वन थिंग इज़ देयर, सी रिमेंबर ओनली व्हेन यू कीप coming on a regular basis it becomes a habit, and many of you have been asking how do we continue after 14 days. Yes, we have something planned out for you. कई लोग बोल रहे हैं कि 14 दिन के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास हम आपको बताएंगे कि 14 दिन के बाद आप कैसे इस योग के साथ जुड़े रह सकते हैं, बिकॉज ये रोज़ रोज़ करने की चीज़ है और उसी से आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है. दिस इज़ समथिंग टू बी प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड दैट इज़ हाउ योर हेल्थ बिकम्स बेटर. ओके, so now let's start with the asana. If you want, you can move to the front a little bit. See, you sit how whatever is comfortable for you. You can adjust on the chair according to your height. अपनी height के हिसाब से chair पे adjust कर सकते हैं. Now we'll start with Urdhva Tadasana. Feet away from each other. Inhale, take your arms up. Interlock the fingers. Turn the palms up towards the ceiling. हाथ को ऊपर ले आएं, उंगलियों को जोड़ लें. And stretch yourself up from the base of the spine, like you're just going to get up, but you're not getting up. आप जैसे उठने वाले हैं पर आप उठ नहीं रहे. इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेच कीजिए ऊपर. And when you're exhaling, just relax in the asana more and more. सांस छोड़ते हुए आसन में और विश्राम करें. Inhale, stretch up slightly more, and exhale, bend from your waist to the right. दाईं तरफ झुकें कमर से. Inhale to the center, exhale, bend to the left. सांस लेते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए कमर से बाईं तरफ झुकेंगे. Are you feeling a nice stretch on the sides? Yes, then you're doing it right. On the side is where all the pizzas and burgers and cheese, all of that is stored. And inhale to the center, exhale, relax. Now increase the distance between your feet a little bit more. पैरों में और थोड़ा distance बना लें and keep your feet slightly outwards. थोड़े से पैर बाहर की तरफ रखेंगे. And now let's stand up. We'll do the Devi Asana now, the goddess pose. So here, keep your arms at shoulder level, bent at the elbow, like a smiling goddess. मुस्कुराते हुए देवी के जैसे हम करेंगे. So what we are going to do, we'll take a breath in and bend, sit on the chair and exhale, get up. So if you want, you can keep a block on the chair for good support. If you cannot go down too much, block रख सकते हैं अगर बहुत नीचे नहीं जा सकते तो. Breathe in, out, in, out, in, out. In, out. Are you still smiling? And one more time. In, out. And relax your hands. Now from here, we'll go into Virabhadrasana or the warrior pose. So for warrior pose, you're going to sit in such a way that your thigh, like whichever side you're doing the asana on, that thigh is on the mat. So right foot is 90 degrees, your left foot is slightly in. बायां पैर थोड़ा अंदर की तरफ है और दायां पैर 90 degrees है. So for easier version, you can follow Mayur. You can hold the chair and do this asana. मयूर को follow कर सकते हैं आसान version के लिए. Body facing front. Inhale, arms up at shoulder level. Exhale, go down into Virabhadrasana, the warrior pose. And look to the right.
Now take a breath in. And as you breathe out, bend from your waist to the right forearm on the right thigh. And exhale, stretch your left arm to the right side. कमर से दाईं तरफ झुकेंगे, बाएं हाथ को दाईं तरफ स्ट्रेच करें. Are you a smiling warrior or are you a worrying warrior? आपके चेहरे पे चिंता है या मुस्कुराहट है? And inhale to the center. Exhale, bend back. Stretch your right arm to the left side. दायां हाथ बाईं तरफ stretch करें. And you can place a left palm on the left leg. बायां हाथ हथेली बाएं पैर पे. And keep looking up. And inhale to the center. Exhale, relax your arms. Now we'll do the asana on the left side, बाईं तरफ. Left foot 90 degrees. Your right foot is slightly in. Body facing front. Inhale, arms at shoulder level. And exhale, bend. So when you're bending, if you feel like you want to adjust the chair, please go ahead and do so. Bend करते वक्त अगर आपको chair adjust करनी है, आप कर सकते हैं. And bend. Your left thigh is on the chair. Look to the left. Breathe in, and as you breathe out, from the waist bend to the left. कमर से बाईं तरफ झुकेंगे, दायां हाथ बाईं तरफ. Keep your right leg straight. दाएं पैर को सीधा रखें. Inhale to the center. And exhale. Bend from your waist to the right side. And stretch your left arm to the right side. कमर से पीछे झुकेंगे दाईं तरफ और बाएं हाथ को दाईं तरफ लेके जाएं. Inhale to the center. And exhale, relax your arms. Now we'll do the asana on the right side. One variation of Veerbhadrasana. एक छोटा सा variation करेंगे हम Veerbhadrasana का. Now this time your right leg is bent, your left leg is behind, and your body is facing right. आपका पूरा शरीर दाईं तरफ है इस बार. Now inhale, take your arms up, and exhale, bend back. सांस लेते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे. If you want, you can lift the left heel up. बाएं एड़ी को ऊपर उठा सकते हैं चाहे तो, जो चेयर पे बैठ के कर रहे हैं वो. And inhale to the center. Exhale, relax your arms. Now on the left side, left foot is to the front and your right leg is back. And your body is facing left. Inhale, arms up. Exhale, bend back. Inhale to the center. Exhale, relax your arms. विश्राम दे हाथों को.
Can relax your arms, your legs a little bit. And now let's get ready for Ashwa Sanchalanasana. For this, place your right foot onto the chair and your left foot is behind. दायां पैर chair के ऊपर रखें. Hold the chair, the back of the chair. From the front, you hold the back. Chair को अच्छे से support के लिए पकड़ लें. And now inhale, look up, push the buttocks down and front and look up. सांस लेते हुए ऊपर देखें. And as you exhale, relax in the asana. सांस छोड़ते हुए विश्राम करें आसन में. Breathe in, and as you breathe out, take your buttocks back, straighten your right leg, come on the right heel, and gently push your chest towards your right thigh. Or you do how much ever you can. You can also bend the right leg. चाहे तो दाएं पैर को मोड़ भी सकते हैं इसमें. And come back to the center. Relax your right leg. Now place your left foot on the chair. बायां पैर ऊपर. And inhale. Look up, push your buttocks to the front and down. Exhale, stay here. Ashwa Sanchalanasana में आ जाएं. And feel a nice stretch in the hip region, in the back, hips में, कमर में अच्छा से stretch महसूस करें. Inhale to the center. Exhale, straighten your left leg. Come on to the left heel. बाएं एड़ी पे आ जाएं. And come back to the center. And slowly, with the support, relax your left leg down. विश्राम दें अपने बाएं पैर को भी. Now move your chair a little to the front. We'll do Adho Mukha Svanasana after this, and then we will sit again and do the asana. So place the chair in front of you. आगे रख लें अपना chair. Hold the chair nicely from the seating area. Move the feet away. धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके आना शुरू कर दें. जितना आ सकते हैं उतना. बहुत. See, if you feel that the grip on the chair is becoming loose, you come to the chair a little closer. थोड़ा पास में आ सकते हैं chair के, अगर grip थोड़ी loose हो रही है तो. Pull the navel slightly in. नाभि को अंदर खींचें. Bend the legs. And push your chest towards your thighs. पैरों को थोड़ा मोड़ लें और छाती को जंघा की तरफ पुश करें. अधो मुख श्वानासन. And now slowly, like a happy dog, happy puppy, start moving your tail right to left, left to right. दाएं से बाएं, बाएं से दाएं. थोड़ा हिलाएं अपने hips को. And slowly start walking to the chair. Chair की तरफ चलना शुरू करें. And come up. ऊपर आ जाएं. Are you feeling a good stretch in your body? Very good. Now let's sit down. Hold the chair from the sides. Now we'll do Ushtrasana. Take a breath in. If you want, again, like I said earlier, you can adjust on the chair according to your body. Inhale, straighten the back.
Exhale, bend back a little bit. Roll your shoulders back, कंधों को थोड़ा पीछे लेके जाएं. Push your chest out and look up. And come back to the center as you inhale. Exhale, relax. Now we'll do Raja Vishramasana. So for Raja Vishramasana, you can bend one of the legs. Bend the right leg first. Place the right foot onto the left thigh. Take a breath in, lengthen the spine. And as you breathe out, bend forward from the waist. कमर से आगे तरफ झुकेंगे. Those who can, you can place the palms on the mat or the fingertips on the mat. जो कर सकते हैं वो हाथ को ज़मीन पे रख लें सामने. And slowly as you inhale, come up. Now bend the left leg. Raja Kapotasana. Sorry, not Raja Vishramasana. Raja Kapotasana. Inhale, lengthen the spine again. And exhale, bend forward. And see if you can, with inhalation, lengthen the spine. कर सकते हैं तो सांस लेते हुए थोड़ा लंबा करें रीढ़ की हड्डी को. And as you exhale, push the chest down. सांस छोड़ते हुए छाती को थोड़ा नीचे धकेलें. And slowly come up. Exhale, relax. Now increase the distance between your feet. पैरों में थोड़ा और जो है distance बढ़ा लें, दूर रख लें. Keep your feet away and slightly outwards. Now take a breath in. And as you breathe out, bend forward. सांस लें और छोड़ते हुए आगे झुकें. Place your palms on the mat if you can. कर सकते हैं तो हाथों को ज़मीन पे रखें. Now inhale, take your right arm up and twist, look up. Exhale, stay here. दायां हाथ ऊपर लेके जाएं और twist करें. And relax the right arm. Now left arm up. बाईं तरफ. Nicely stretch your arm up and feel a nice twist in your spine. Relax your left arm and slowly come up. Feet are still away but a little closer. पैर थोड़े से पास में ले सकते हैं पर अभी भी दूर रखेंगे. Now breathe in. Breathe out, twist to the right. सांस लें और छोड़ते हुए दाएं तरफ twist करें. With your right palm, you can hold the right arm. And look over your right shoulder. Come to the center and twist to the left. बाईं तरफ twist करें. You can place the right palm on the outside of your left leg. दाएं हथेली बाएं पैर के बाहर रख सकते हैं. And come back to the center.
Now again, right palm on the outside of your left knee. Take your left arm up. As you inhale, exhale, bend to the right. सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर और छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकेंगे. Come back to the center and relax your left arm. Now left palm on the outside of your right knee. Right arm up and bend to the left. And to the center and relax. Now just 2 more asanas we'll do lying down on the back. So you can keep the chair in front of you. Bring the buttocks close to the chair and place your feet onto the chair. पैरों को chair के ऊपर रख लें, buttocks को थोड़ा chair के पास में ले आएं. So you can adjust according to your height. थोड़ा अपने height के हिसाब से आप adjust कर सकते हैं. Now hold on to the chair for good support. Chair को पकड़ लें. Now place the feet onto the chair. As you inhale, lift your buttocks up. And exhale, stay here. कमर को ऊपर उठाएं, पैर चेयर पे हैं. सेतु बंधासन. You can follow मयूर for the easy version. मयूर को follow कर सकते हैं आसान version के लिए. And slowly come down. Relax. Now keep holding the chair, and those who can, with the support of the chair, straighten your legs. विपरीत करनी. If you want, you can also bend the legs a little bit. पैरों को मोड़ सकते हैं चाहे तो. And relax the legs. Now let go of the chair, the support of the chair. You can keep the feet on the chair. पैर को chair पे रख के ही आज हम विश्राम करेंगे. Let's close our eyes. Your legs are on the chair. Take a breath in. And breathe out. One more long deep breath in. And exhale completely. And let your body be still like a statue. अपने शरीर को एक मूर्ति की भांति स्थिर रखेंगे. You don't want to know anything. You don't want to do anything. ना कुछ जानना है और ना ही कुछ करना है.
Breathe in and breathe out. Now slowly relax your feet, bring them down. And you can turn to the right side and keep lying down with your eyes closed. पैर को नीचे ले आए और आंखें बंद रखते हुए दाईं ओर करवट ले लें. And you may slowly sit up. धीरे से उठ के बैठ जाएं. And you may gently open your eyes. So if you want, you can still sit on the chair and do the pranayama and meditation. चाहे तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं बाकी का सेशन. Now we'll do a very relaxing pranayama. The breath is called the straw breath. So for this, you inhale through the nostrils and exhale through the mouth like you're exhaling into a straw. आप नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे जैसे आप एक कोई नली में सांस छोड़ रहे हैं, इस तरीके से. Let's do a few rounds together. Eyes closed. Breathe in through the nostrils. नाक से सांस अंदर. Exhale through the mouth. मुंह से बाहर. In. Out. Continue on your own. अपने आप से चालू रखें. Long and deep breaths in and out. लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर. And relax. Keep your eyes closed and a gentle smile on your face. आंखें बंद और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान. Breathe in and breathe out. One more long deep breath in. And exhale completely. Now as you inhale, take your attention to the top of your head. सांस लेते हुए ध्यान सर की चोटी पर लेके जाएं. And as you exhale, bring it down along the spine. सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ ध्यान लेके जाएं.
at the base of your spine. Breathe in, top of the head, सर की चोटी पे ध्यान. And breathe out at the base of your spine. रीढ़ की हड्डी पे, नीचे की तरफ. And continue on your own. चालू रखें अपने आप से. Long and deep breaths. लंबी गहरी सांसें. And let go. Let go of all the effort and relax more and more. पूरी तरह विश्राम करें. ओम शांति शांति शांति. Take a breath in and breathe out. And slowly and gradually, with a smile on your face, you may open your eyes. मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं. How was it? How are you feeling right now in the body and in the mind? Did you feel a good stretch in your body? Quickly write down in the comment section and drop hearts also in the comment section. If you really feel a nice stretch in the body. आपका मन और शरीर कैसा है हमें बताइए. और शरीर में अच्छा अगर अच्छा स्ट्रेच हुआ तो हार्ट्स भी भेजिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है. सो टुमारो वी हैव अ सेशन ऑन फुल बॉडी डिटॉक्स. विल थ्रो आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू सम आसनास. कल हम हमारे पूरे शरीर का डिटॉक्स करेंगे आसन के द्वारा. ओके. एंड लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर आस्किंग व्हाट टू डू आफ्टर 14 days, विल ऑल्सो लेट यू नो. वी स्टिल हैव फ्यू मोर डेज टू गो. हम आपको बताएंगे 14 दिन के बाद भी आप किस तरह से योग अभ्यास से जुड़े रह सकते हैं. ठीक है. यू ऑल हैव बीन डूइंग वेरी वेल, सो कंटिन्यू विद द सेम कमिटमेंट. आप इसी तरीके के कमिटमेंट से आगे चलते रहिए इस चैलेंज में. नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. नमस्ते.
Namaste everyone and welcome to the free online yoga challenge with the Art of Living and Shri Shri School of Yoga. I'm Isha. I'm Mayur. You've been doing yoga for more than a week now, so quickly write down in the comment section what your experience has been. हमें जल्दी से बताइए comment section में कि आपका अनुभव अभी तक योग करने का क्या रहा है. And today we are going to do a session on chair yoga. You know, you all want to do yoga on a regular basis, but how can you do yoga when there's less space? Sit on a chair and you can still practice yoga. आप कैसे कम जगह में भी, अगर कम जगह है उस पर कैसे कुर्सी पे बैठ के योग का अभ्यास कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे. You know, in Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna says, Yoga karmasu kaushalam. Yoga is skill in action. You know, to cook, to drive, or to even paint, to do anything in your life, you need some skill. But the kind of skill that we are talking about here is a skill to live life. You know, in our life, we meet different kinds of people, face different kinds of situations, favorable or unfavorable. How to manage your mind through all these situations while working with all sorts of people, that is what comes when you practice yoga. देखिए, हमें खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, पेंट करने के लिए एक कुशलता चाहिए, है ना. पर जो हम कुशलता की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जीवन जीने की कुशलता है. ये कैसे हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करके अलग अलग तरह की परिस्थितियों में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन को हम मैनेज कर सकते हैं. वो कुशलता आप में आती है जब आप योग का अभ्यास करते हैं. ठीक है, सो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. शैल वी बिगिन? Yes, let's begin. All right, so let's get on the chair. So if you have a chair without arms, that will be very good, but even if you have arms on the chair, it's fine. So let's sit with our eyes closed. We'll start by chanting Om 3 times. Keep a gentle smile on your face. Now breathe in for Om. Wherever your mind is wandering, bring it back to this moment. आपका मन जहाँ भी जा रहा है इस क्षण में लेके आ जाएंगे. And slowly you may open your eyes. And today we are going to do Kaki Pranayam. So for Kaki Pranayam, you inhale, bend back slightly, look up, exhale through the mouth, through spurts of breath and bend forward. काकी प्राणायाम के लिए सांस अंदर लेते हुए पीछे झुकेंगे और मुंह से सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे. धीरे धीरे सांस छोड़ना है. You can close your eyes. आंखें बंद कर सकते हैं. Breathe in. Exhale out. In. In. Two more times, 2 बार और. Breathe in. In.
And slowly come up and observe the sensations within. शरीर में जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति सजग हो जाएंगे. And feel the rush of energy in your body. ऊर्जा के संचार को महसूस करें. And you may slowly open your eyes. And today let's start with a standing warm-up. Since we are going to sit throughout the session, let's stand up and do some warm-up. खड़े होके कुछ warm-up करते हैं क्योंकि आज सारा session हम बैठ के करने वाले हैं. So if you want, you can still take support of the chair